चार स्प्रिंग को स्क्रू करेगा, जस्ट स्टे इन प्लेस। प्रीमियम ब्रांड्स है, इसलिए उनके ऊपर ब्रैकेट्स है, तुम 500 मेगा से ड्रॉप रहेंगे नॉर्मल इसका वर्क स्टेशन है। हाँ, ये SLI ब्रिज है, like you can connect multiple graphic cards इसके ऊपर, it supports them all। एक्सटर्नल कनेक्शन है, इसको एक्सटर्नल पावर लगता है, and these are 4 GTX 580 graphic card, ये high end tech। Now it's a 38 degrees and then it will cool down। अभी liquid nitrogen कोट किया, Celsius. माइनस में या माइनस में ब्लोटर्स से लाइट किया तो लिक्विड नाइट्रोजन को जैसे ब्लोटर्स लगाया तो वो फ्रीज हो गया, तो आइस का लेयर फॉर्म हो गया एंड देन इट गोज डाउन इवन फर्दर -79 एंड कितना भी और कर सकते हैं, कंपोनेंट्स से सेफ। With the CPU cool down, I can now start up with my dynamic CPU. I start with the baseline profile of 5 GHz. I start with about that. बाहर से लेंगे I pull the CPU down, take it down to Celsius. You don't want to go too cold because you can cause an issue out of some cold food bug. To demonstrate this, I got the CPU to -120 degrees Celsius. Then tried to start pushing it. -190। So after a point ये होता है like frost bug, तो -120 के या 118 डिग्रीज के ऊपर नीचे अगर गिरता है टेम्परेचर तो CPU also cannot start। तो start it up ब्लोटर्स सब पता है, तो इसका कॉम्पिटिशन होता है वर्ल्ड वाइड, लाइक लोग आते हैं अपने नए आइडियाज एंड दे कैन जस्ट इसका हाईएस्ट गीगाहर्ट्ज तो ये एंट्री है, लाइक हाई वीडियो एंट्री है, हाउ द प्रोसेस इज वर्किंग एंड देन इट विल जस्ट कोलैप्स, वीडियो विल कोलैप्स, तो CPU इज डेड। -150 तक है, 94 more then it will just temperature drop down and it will just fall, so the CPU is dead at this moment, and then loader से वो light up करेगा, थोड़ा सा charge up करने के लिए, so then it will just, so that's pretty much I ran a system earlier at stop clocks and got a 3D Mark 11 score of 15,373. With the CPU overclocked to 5.793 gigahertz, I was able to get a score of 20,339, which was good enough for a top 10 spot on the 3dmark.com Hall of Fame. For fun, I decided to see how far I could push my 990X. I used the ROG Connect function on my motherboard. 6 gigahertz तक है। Max frequency ended up being just over 6 gigahertz. Thanks for watching, and if you want to learn more, read my article. ओपन कनेक्टर, सो बेसिकली 24+4 ऐसा होना चाहिए, 24 पिन कनेक्टर मेन पावर देता है और ये और एक पावर प्रोवाइड करता है मदरबोर्ड को, ये दो नहीं लगाओगे तो मदरबोर्ड नहीं चलेगा, सो मदरबोर्ड के लिए ये है, एंड देन दिस इज 4 पिन IDE कनेक्शन, लेकिन तूने अपने जो हार्ड ड्राइव रहते 2 GB पर से 1.5 GB पर से उसके लिए यूज होता है, एंड ये अपना SATA है, ये तो सबको पता रहेगा, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैच, सो ये अभी के लेटेस्ट SATA हार्ड ड्राइव में यूज होता है, SSDs में यूज होता है, और अपना M.2 SSD भी है इंटेल का जो डायरेक्ट ऑन बोर्ड लगता है, उसके लिए यू नीड हाई एंड बोर्ड्स। ये अपना कैबिनेट है, द कैबिनेट सर्कल का कैबिनेट है, गेमिंग कैबिनेट है, एंड ये सपोर्ट करता है वाटर कूलिंग, देन ओवरक्लॉकिंग के लिए यूज कर सकते हैं, गेमिंग के बड़े बड़े कार्ड्स पे कैन टेक अप टू 4 कार्ड्स ले सकता है। कैबिनेट जस्ट ओपन इट अप,
सब कुछ दिख रहा है, एक मदरबोर्ड है, वो ग्राफिक्स कार्ड है, जीपीयू है, यहाँ पे कूलिंग फैन, सारे कनेक्शन इट सीम्स जम्बल्ड अप बट दे जस्ट रिमूव्ड ऑफ वन बाय वन एंड आई टेल यू क्या क्या है, कैसा है, इजी है। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पहले तो बेसिक सबको पता है ये तो कि एरर आ गया स्क्रीन पे तो फर्स्ट थिंग वी रिमूव द रैम। तो ये ड्यूअल चैनल रैम से, लाइक 2 रैम लगाए हैं ड्यूअल चैनल में 4 GB रैम से, DDR3 1333 मेगाहर्ट्ज पे क्लॉक थे, तो बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक रैम से DDR3। देन अभी GPU निकालेंगे। ये AMD का है, सफायर का मैन्युफैक्चर्ड AMD ने चिप दिया है ये GPU को। सो दिस इज Ryzen 250, मिड रेंज है, 7000 अराउंड प्राइस है उसका। सो दिस इज 1 GB DDR5 मेमोरी टाइप है एंड पेन रहता है छोटा सा। तो ये Ryzen 250 है, यहाँ पे कूलर लगा है, नीचे हीट सिंक है। देन PCI into 16 स्लॉट में रहता है, जो PCI हम लोगों ने पढ़ा था COM, वही प्रोग्रामेबल कंट्रोलर इंटरफेस। ये अनेबल करता है अपने को, लाइक अपने मदरबोर्ड पे HDMI पोर्ट नहीं रहता, सो थ्रू दिस यू कैन कनेक्ट इट टू HDMI डायरेक्टली, साउंड भी देता है। नाउ 2 राइवल्स है, सबको पता रहेगा ग्राफिक कार्ड इंडस्ट्री, एक GPU में एक NVIDIA है और एक AMD है। AMD के पास कैटलिस्ट ड्राइवर्स है, NVIDIA के पास फिजिक्स है। तो जनरली वो क्या करते हैं, लाइक व्हाट इज फिजिक्स, सो गेमिंग के टाइम जब यू कैन सी द वाटर फॉलिंग इफेक्ट या एनी नेचर का इफेक्ट जो भी हमको दिखता है गेमिंग में, तो वो कोड डिफाइन करता है, फिजिक्स कोड डिफाइंस ऑल दोज इफेक्ट्स। ये DDR5 है, लाइक मेमोरी पे नहीं, वी शुड नॉट रन मेमोरी, लाइक जब ग्राफिक कार्ड लेते हो कभी तो मेमोरी टाइप लेते हो, DDR5 है सो यू कैन बाय, डोंट सी द कंटेंट, लाइक 1 GB है, मेरे पास 4 GB का मेमोरी कार्ड है बट आई मीन ग्राफिक कार्ड है बट DDR3 मेमोरी कार्ड है, डोंट गो एंड क्लॉक स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये है 1000 मेगाहर्ट्ज पे क्लॉक, 1 गीगा। तो क्या होता है जब हम गेम खेलते हैं तो बहुत सारे फ्रेम्स रेंडर होते रहते हैं बैकग्राउंड में, सो CPU में बहुत लोड आता है उसमें, लाइक जनरली तुम लोगों ने देखा रहेगा टास्क मैनेजर में CPU जस्ट 3 to 5% यूटिलाइज होता है, बट गेमिंग के टाइम गोज अप टू 20%, 30%। सो कैसा होता है, हीटअप होता है, उसकी वजह से हैंग होता है। सो ग्राफिक कार्ड जनरली क्या करता है, उसके आधे फ्रेम्स ले लेता है, खुद प्रोसेस करता है एंड अगेन सेंड्स इट बैक टू द CPU। सो ऐसे टाइम पे इट मेक्स इट स्मूथ, वी गेट मोर फ्रेम्स पर सेकंड एंड रियलिस्टिक इफेक्ट लगता है, यू कैन प्ले ऑन हाई एंड, नॉट जस्ट प्ले, लाइक एडोब आफ्टर इफेक्ट्स एंड बहुत सारे सॉफ्टवेयर है रेंडरिंग के, वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर, वो सब भी इस पे स्मूथली फंक्शन करते हैं, इट्स अंडर लेस लोड ग्राफिक कार्ड। रिमूव द अभी हार्ड ड्राइव, दिस इज SATA पोर्ट्स, ये दो जो है ना ब्लैक कलर के नीचे, ये SATA पोर्ट्स है, सीरियल एडवांस सिग्नल है, वहाँ पे 2 सोल्डरिंग की जगह है, बट ये माइक्रो ATX फॉर्म फैक्टर वाला मदरबोर्ड है, बहुत बजट है, 1200 में मिला था मुझे, तो वहाँ पे जस्ट 2 ही पोर्ट, you can connect only 2 hard drives, 1 hard drive, 1 CD drive, and then it's done. So ideal नहीं है, but normally you get 4 ports. यहाँ पे अपना hard drive और ये connect है, CD drive. Just remove the ये अपना हार्ड डिस्क है, अभी वो केस ब्रैकेट में है क्योंकि ये केस यानी गेमिंग केस है, तो जो है जस्ट गिवन अ क्लिक वाला, यू कैन जस्ट क्लिक इट एंड पुश इट इन। यहाँ पे 2 पोर्ट्स है, लाइक दिस वन इज डेटा इनपुट, लाइक ये मदरबोर्ड को कनेक्ट होता है एंड यहाँ पे पावर वाला जो मैंने पहले दिखाया था मुझे SATA पावर SMPS पे दिखाया मेन बोर्ड निकालते हैं,
ये अपना 24 पिन कनेक्टर है, 24 पिन कनेक्टर है. देन दिस इज फ्रंट पैनल. दिस इज वेरी टीडियस है, लाइक ये निकालते टाइम यू हैव टू क्लिक अ पिक्चर बिकॉज एवरी टाइम आई डोंट रिमेंबर लाइक ये फ्रंट पैनल है आयो. यहाँ पे से अपना जो बटन है फ्रंट बटन और फ्रंट के जो लाइट्स दिखते हैं सीपीयू के वो कंट्रोल होते हैं. सो व्हेन यू क्लिक इट देन इट टर्न्स ऑन. एंड एट टाइम्स ऐसा बहुत बार हुआ था कभी तो यूट्यूब वीडियो ही नहीं था एंड नहीं होता था चल. इट यूज्ड टू टेक एन आवर टू फिक्स दिस. उल्टा लगा सीधा लगा. सो इट्स बेटर टू क्लिक अ पिक्चर प्लीज. नेट पे भी मिल जाता है इसका मैप बट इट्स बेटर टू जस्ट. देन ये अपना फ्रंट पैनल नहीं ये यूएसबी है. लाइक अपना जो बोर्ड पे यूएसबी है पीछे के पैनल पे यूएसबी पोर्ट से राइट. बट जो फ्रंट वाले हैं जो हम लोग आगे पेन ड्राइव लगाते हैं वो बोर्ड को लिंक होते हैं यहाँ से. मदरबोर्ड इज एवरीथिंग इज लिंक्ड फ्रॉम हियर. एंड देन दिस इज आवर फ्रंट पैनल ऑडियो. तो यहाँ पे अपना जो माइक्रोफोन एंड माइक यू कैन अटैच हियर बिसाइड्स द यूएसबी. तो वो यहाँ से फ्रंट पैनल ऑडियो. वो येलो कलर का जो है 9 पिन्स. एंड इस कनेक्टेड टू मदरबोर्ड. लाइक नॉर्मली पावर सप्लाई तो कनेक्टेड रहता है बट ये फैन को मदरबोर्ड से मिल रहा है पावर मिल रहा है. Why is it? Because when you go in BIOS setting you can view its RPM 2000 RPM पे चलता है. So you can view the RPM literally monitor it. एंड इसके कलर्स आते हैं. जीरो से रेड कलर का है रेड एलईडी. बट आरजीबी कलर कॉम्बिनेशन में यू कैन जस्ट व्यू की यू कैन चेंज द कलर मेक इट मोर अट्रैक्टिव. It's like 3-pin connector. There is a red one. The red one is the connection where it goes. Now we just unscrew it. तुम लोग पता है कि लैपटॉप में इंटरनेट वाईफाई रहता है बराबर सबके लैपटॉप में. बट पीसी यू हैव टू कनेक्ट टू लैन पोर्ट. सो वी ऑलवेज से कि नहीं पीसी के बाजू में मॉडेम देना नेट कनेक्टर. तो मेरा भी ऐसे ही हुआ था प्रॉब्लम एंड माय पीसी इज इन द बेडरूम. तो तभी मुझे मालूम लगा सर्च ही ऑन अमेज़न एंड मुझे एक लैन कार्ड मिला. मैं लैन कार्ड रहता है अपना बट ये वाईफाई है लिंक का. यहाँ पे एंटेना है तो ये एंटेना निकलता है एंड द कार्ड गोज ऑन द बोर्ड. कार्ड बोर्ड पे है एंड एंटेना पीछे से निकल रहा है. सो दिस गिव्स वायरलेस एक्सेस टू द कंप्यूटर. सो नो नीड टू प्लेस इट बियॉन्ड या बिसाइड योर मॉडेम. डायरेक्टली कर सकते. जैसे ही मैं वीडियो सर्व कर रहा था तो मुझे दिखा एंटेना इज रिमूवेबल. वाईफाई का यहाँ से एंटेना लगता है. दैट्स द इंडिकेटर एलईडी. सो वायरलेस एनेबल्ड ये पीसी बोर्ड इज कमिंग आउट. अभी ये फैन ये सीपीयू सबको पता रहेगा. ये बेसिक सीपीयू कूलर है. प्री सीपीयू में बायस सीपीयू यूएड सीपीयू कूलर है. बट ऑटो फोकस मार्केट में ऐसे भी कूलर्स आते हैं लाइक कस्टम कूलर्स लाइक कॉर्सर के EVGA के एंड इसके कूलर मास्टर के. सो व्हाट दे डू इज दैट दे हैव अ ह्यूज हीट सिंक. इतना बड़ा फैन रहता है लाइक रियली बिग एंड इट कूल्स इट मोर एफिशिएंट. कूलिंग क्यों करना है उसका वो भी मैं बता दूँ आगे. इट्स रियली फैसिनेटिंग. अभी विल रिमूव द प्रोसेसर. सो कैसे निकालना है यहाँ पे देखो. यहाँ पे arrows are there. You can see some markers at pointer anti-clockwise. So you have to just twist it. These are the most delicate part of the or you can say heat sink because ये अगर पैर टूटते हैं ना ये निकलते हैं every time when you do it for the first time it breaks. And if it breaks out then it's like of no use. बहुत महंगा है fan is like 300-500 का है. So you just twist it down like arrow के direction में anti-clockwise twist करने के बाद just pull it up. Let me have a click. And हमें just star shape में करो like अगर ये वाला किया तो then this is the next one cross one and then opposite. Okay. Diagonal opposite. And here is the CPU power cable. Open. यहाँ पे लिखा भी है.
इससे अपने फैन को पावर मिलता है. फैन का भी आरपीएम जैसे 300 आरपीएम पे यू गेट 3000 आरपीएम के फैंस. इट्स लाइक ओवरक्लॉकिंग वगैरह किया हुआ कंसेप्ट पता तो उनका में कभी असेंबल जस्ट रिमूव द फैन, जस्ट क्लिक सर्च. Here is a chip. तो उसके ऊपर वो थर्मल ग्रीस है जो पहली बार पैकेट में जो ये है, बट बाद में मैंने कभी प्रेफर नहीं किया था. It just acts as a compound between your fan base and the CPU's upper end. So कैसा है वो एक लिक्विड लेयर फॉर्म करता है तो हीट ट्रांसमिट होता है परफेक्टली एंड रिमेन्स कूल. 2-3 डिग्री और कम रहता है. So we'll make remove it first. यहाँ पे एक ब्रैकेट था ऑलमोस्ट थिंग. उसके पहले ये एरो दिख रहा है. ये एरो अलाइन करना पड़ता है अपने को सीपीयू के ऊपर. ऐसा सेम एरो रहता है. टू नो लाइक इफ यू डोंट नो हाउ टू प्लेस द सीपीयू पे एक एरो रहता है एंड दिस एरो टू मैच इट. व्हेन यू मैच बोथ ऑफ देम देन इट्स इन परफेक्ट अलाइनमेंट एंड देन यू कैन क्लोज द ब्रैकेट. तो ब्रैकेट बहुत टाइट बंद होता है एंड ऐसे टाइम अगर हम बंद करने का है इफ इट्स रॉन्गली अलाइंड देन इट विल जस्ट विल ब्रेक, द पेन्स विल ब्रेक एंड इट वोंट वर्क. एंड इट्स लाइक बहुत कॉस्टली रहता है. सीपीयू इज अराउंड 7000. सो कंफिगर इट. See, you can see the arrow here too. You can see the arrow. You can align this arrow with this arrow. Yeah, that's how it is. And do not touch the bottom of the CPU. 18 karat gold plate. Now pen less. Core i3 third generation 3210 clocked at 3.2 gigahertz. This is about when I was in 10th. You just place it back and you can't keep it. Like डस्ट वगैरह लगा तो खराब हो जाता है. फैन भी लगा के फैन भी सेम वे. जस्ट हाउ यू रिमूव इट यू जस्ट प्लेस इट. 4 होल्स है, 4 पैर है उसके एंड यहाँ पे कनेक्ट द पावर ऑफ द फैन. ओके, देन चारों पैर आर फिक्स्ड इन प्लेस. देन डायगोनली यू हैव टू जस्ट फिक्स इट लाइक टर्न इट क्लॉकवाइज. But you have to click it clockwise. Yes. Clockwise. So this needs practice. Like first time press कर रहे हो तो टूटता ही है. बहुत तो है. But anyway. And what else? Here the circles power supply here. First I used to use to get SMPS for like 600 rupees. एकदम सस्ता रहता है. SMPS is the most important component in मेरे को like last 1.5 साल में पता चला था. मेरा एक बोर्ड जल गया उसकी वजह से. And जैसे तुम लोग का ये बढ़ते जाता है what you say configuration जैसे हाई होते जाता है वैसे you have to keep changing it. Best what you say PSU is of Cooler Master and Corsair, but they are very expensive like 6000, 7000, 1500 watt तक मिलता है. 1500, 2000 watts तक मिलता है. This is 500 watt. And it's quite premium in its range. Like Circle का है. show you. वही पावर सप्लाई मैंने पास किया था वो 1.5 है. सारे केबल लाने pretty much यहाँ पे ऐसा बेस पे एक बड़ा फैन है because it's like cooling के लिए. Components are really heavy. It can handle up to like देख लेंगे 730 सीरीज के सारे GTX के कार्ड्स ये हैंडल कर सकता है ऐसा बोलते हैं.
आईवी ब्रिज सपोर्ट भी है, SLI ब्रिज लाइक मल्टीपल ग्राफिक कार्ड्स कनेक्ट करते हैं लाइन में फॉर मोर परफॉर्मेंस। उसके लिए ये 8 पिन कनेक्टर दिया है टू पावर द ग्राफिक कार्ड, एक्सटर्नल पावर लाइक बोर्ड से अगर पावर इनफ नहीं है तो दे यूज दिस। रेस्ट ऑफ द कनेक्शंस आर सेम, so everything is now disassembled. So we just reassemble it out of the case. So we place our motherboard. Basic thing is this LAN. Okay, now while connecting the LAN, now we are connecting everything together. So ये बहुत important है ये connections तुम लोग को देखना. So ये notch है, यहाँ पे notch है. And there is glitch here. Small. So to match this, like this portion is small, this portion is big. So ऐसा just to insert it and every other clip. ये side पे तो कैमरास में से निकलना clips है, but you don't have to put them together. They should go there one by one. Same with the other. This is powered with like 8 gigs of RAM with dual channel. Dual channel is always better. Comes in. Now we'll put the GPU in the same sequence. जैसे हम लोग निकाला वैसे हम लगाएंगे पूरा. So this is the GPU. This is a PCI into 16 slot and this is a PCI into 4 slots. You can see. और एक आता है PCI into 8 आता है जो ये बोर्ड में नहीं है, पुराने बोर्ड्स पे रहता था। वहाँ पे LAN कार्ड साउंड कार्ड लाइक पहले बोर्ड पे साउंड भी नहीं रहता, ये जो हमारे स्पीकर्स एंड ऑल भी कनेक्ट किया ग्रीन वाले, तो वो भी नहीं रहता था पुराने बोर्ड्स पे। सो नाउ वी हैव एवरीथिंग। अभी तो वाईफाई में इंक्लूड आता है, लाइक अ स्मॉल आईसी आता है उसमें वाईफाई कनेक्ट। सो वी जस्ट पुट इट इन एंड प्रेस इट डाउन, graphics card in place. Then you connect the hard drive. This is a SATA cable. In SATA port, any port you can select. See, this is L shape. You have an L. You can see the L shape. You match it with the L shape here. Just clicks in. The key thing is like कुछ भी force नहीं करना है यहाँ पे, जैसे हो रहा है easily you just connect it. Remember the connection. Goes the hard drive this way. Hard drive is connected. This is the Wi-Fi hub. Same way as the graphic. Just do it. So everything is connected. Like नीचे जो पार्ट्स हैं वो सारे connected है यहाँ पे. Only thing is left with the power supply. It gives power finally. इसका एक order है. I always do it in this order. Like, this is 24 pin connector. ये major power देता है board को. तो ये पहले connect करना है यहाँ पे. यहाँ पे एक notch है, you can see. ये नॉच दिख रहा है, ये नॉच अपने को यहाँ पे ऑन द मदरबोर्ड देयर इज अ लाइन है, ये लाइन है तो यहाँ पे वो क्लिप ऐसा अटैच होता है, यू कैन जस्ट पुट इट हियर। सो यहाँ पे यू जस्ट अटैच इट एंड इट गोज इन इजी, ये फोर्स करने का जरूरत नहीं। ये पहला, देन into 4. First we connected 24 pins, now we connect a 4 pin connectors. These are the 4 pins. Then provided 2, कोई बोर्ड्स पे लगते हैं। Same way, plug it in. Make sure कि कोई भी केबल कोई भी फैन में ना फंसे, ना तो थर्मल पावर ब्रेक होता है। अगर फैन का RPM कम होता है, and if it heats up more, then it will not work, or you can damage your parts easily. Then here you have to, now power supply should be connected to each and every component. because सबको पावर चाहिए, सब everything works on power. So यहाँ पे भी same L shape है, तो बड़ा है and will be connected to the hard drive. Okay? So hard drive is powered, everything is powered and put to the device. Just check the connections once.
4 पे 24 पे 4 पे है, then it seems pretty small, right, out of the case. Now this is the main okay 3 pin. तो 3 pin power है, तो आपको पता है CPU के पीछे हम लगा देते हैं. Just plug it in. This is a VJ connection of the projector. So it runs, like when it will run, it will draw output to the what you can say projector, and you all can see it on the screen. It will connect it to the GPU. Now we have onboard graphics to Intel HD 3000. पता है जो basic 1080p videos and basic use के लिए use कर सकते हैं, but not up to date, up to the mark. So when you are connecting a GPU, then you have to connect it to the GPU. तो वहाँ पे कोई display नहीं होगा. This is the primary output device for display. पावर ऑन, अभी पावर ऑन नहीं होगा वैसे नॉर्मली, क्योंकि बटन नहीं है, लाइक यू हैव टू प्रेस द बटन ऑफ द सीपीयू टू टर्न इट ऑन. तो यहाँ पे फ्रंट पैनल पे वी जस्ट शॉर्ट द 2 पिन्स ऑफ the 2 red pins. You just short it and then you start. Started off, all the fans are rotating, and it's the change that but easy. First time flip होता है, first time when you connect and reconnect it, so it trips, expected था ये. Again we started. So all the fans are rotating, everything is working. PC on हो चुका है and yeah, started. So simply एक बार फिर से कनेक्शन देखिए. तो क्या किया, रैम स्लॉट में है, एक 24 पिन कनेक्टर है, एक 4 पिन कनेक्टर है एंड GPU कनेक्टेड है. एंड नाउ इट विल वर्क. लाइक अगर नहीं किया GPU भी कनेक्ट नहीं किया, एनीथिंग एल्स इफ यू डोंट कनेक्ट, देन इट विल स्टार्ट. मेजर चीज़ें तीन ही है, लाइक रैम, CPU है, कितना हार्ड ड्राइव है, वहाँ से भी तुम लोग का PC ऑन हो सकता है. लाइक नेट पे तुम लोग अभी बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है. अभी इनपुट आउटपुट डिवाइस नहीं है, कीबोर्ड माउस, you can just see the PC running. So that's the thing.